So, good morning, everyone. I hope I'm perfectly audible and visible to you guys. So, today is 1st of July 2026, and now is the time when we should start with today's analysis of the Hindu. Right. So, let's start with today's session now. So, today's 1st of July, I guess. Yeah, I guess today's 1st of July. Let's start with today's session now. So, this is the first major news headline that we have to cover, and it is again, it was this is the first news headline that we have to cover today. Today is 1st of July, and this is related to the impact of El Nino is quite visible, a weather phenomenon whose impact is actually hitting India hard. In the month of June 2026, monsoon was below 40% below 40% the average level. So this is again a very disturbing thing for India. And in the month of July 2026, the situation is not. It seems that situation will not improve much in the month of July, and because of the impact of El Nino, June 2026 witnessed lowest. It was fifth lowest rainfall since 1901. Right. Again, not so much of a relevant fact for your examination. Academic discussion. के लिए we don't have much of the information here. Now, let's talk about the privilege motion. Now, what is a privilege motion? Anyone who would like to answer the question? What is a privilege motion? So, privilege motion is basically it's brought against a minister against a minister for violating violating certain privileges, right? अब recently राजनाथ सिंह के अगेंस्ट privilege motion क्यों आया? राजनाथ सिंह के अगेंस्ट कोई बता सकता है कि ये प्रिविलेज मोशन क्यों आया? क्योंकि राजनाथ सिंह ने अभी रिसेंटली किसी भी मिनिस्टर या किसी भी एमपी के अगेंस्ट ये प्रिविलेज मोशन लेकर के आया जा सकता है और कोई भी एमपी लेकर के आ सकता है. And where this particular motion is brought when
ओके, आवाज नहीं आ रही है. ओके, फाइन. बट देयर वाज सम. Am I audible now? Okay, am I audible now? Am I perfectly audible? Am I audible? Okay, we can start. We can start with the substantial pieces of information. The first one is that Indian government is trying to you know uh, reintroduce tigers at certain areas so that the population of tigers can be increased. The primary example or the primary success of this particular program was in Sariska, Rajasthan, where the population of tigers was zero in 2008, but it has been increased. It has increased from 0 in 2008 to 56 at present, right? So this is a primary example which will give a push to Indian government to reintroduce tigers at certain areas in our country. Now moving on to the next point. Now this is related to the Ramsar sites. So we were discussing about Ramsar sites. So what are the different points related to the Ramsar sites which are extremely relevant? So the first one is that currently in India we have total 100 number of Ramsar sites. यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स अगर हम कंट्री की बात करें, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, राइट? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तमिलनाडु हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स एंड इन इंडिया वी हैव टोटल 100 रामसर साइट्स. These sites are spread across 28 states. Now the next important point related to the Ramsar sites. So Ramsar sites are nothing. Ramsar sites are nothing but these are the wetlands which needs the attention from the government so that these wetlands can be easily protected, right? Ramsar sites are recognized as per the Ramsar convention. Ramsar sites are recognized as per the Ramsar convention, and Ramsar convention was signed on 2nd February 1971. It was signed on 2nd February 1971, and we celebrate World Wetlands Day every year on 2nd February 1971. Now moving on to the next point. अब एक चीज आप लोग और पूछ सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी रामसर साइट के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ व्हिच इज द smallest Ramsar site in India? So Renuka Lake is the smallest Ramsar site in India. Renuka Lake is the smallest Ramsar site in India. So these are the points which you should keep in mind related to the Ramsar convention. Now students, at the same time we should know about one more thing which is extremely relevant for your examination, that when we talk about reintroduction of tiger, so anyone, any idea about Project Tiger? So we are discussing about tiger, so let's discuss about Project Tiger as well, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कवर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रोजेक्ट टाइगर was an initiative launched by Indian government in 1970. It was related to survival and protection of tigers in इंडिया. अब जब इसी का 50th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया था, तब हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया था, राइट? And initially when this particular project was launched, it was only limited to 9 tiger reserves. Initially project was limited to only 9 tiger. Initially the project was limited to only 9 tiger reserve, right? Now moving on to the next point.
And currently this project tiger is spread across 55 tiger reserves. एंड अगर आपसे कोई डेट पूछ ले कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था, सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973. अप्रैल फूल के दिन हम लोगों ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, राइट. Now this 55 was till 2024. Currently, the project Tiger has been expanded to 58 Tiger Reserve till 2024. जब हम लोगों ने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, उस टाइम तक ऑलमोस्ट 54 टाइगर रिजर्व थे. करंटली इट इज स्प्रेड अक्रॉस 58 टाइगर रिजर्व्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. And under Project Tiger, the population of tiger is now estimated at somewhere between 3,682 tigers अभी इंडिया में टोटल हैं. And in 2006 students, the population was 1,411. So in last 20 years, टाइगर्स का पॉपुलेशन 1411 से बढ़ करके 3682 हो गया. सो दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर विच आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन. तो यही सारी चीजें कि रीइंट्रोडक्शन होगा टाइगर्स का. द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर्स बाय रीइंट्रोड्यूसिंग टाइगर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट. नाउ so General Dheeraj Seth has been appointed as the 31st Chief of the Army Staff. Mr. or General Upendra Dwivedi has completed his tenure as the 30th Chief of Army Staff. He will be replaced by General Dheeraj Seth, who is who is serving in the Indian Army for last 4 decades. So this is going to be a huge change, as under the time of General Upendra Dwivedi, we witnessed Operation Sindoor and some of the very important military missions and military objectives. तो उनको replace करेंगे 31st Chief of Army Staff Mr. और General Dheeraj Seth. Now students, बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है. इन सब लोगों का नाम आप एक जगह पॉइंट आउट करके एक जगह जॉट डाउन करके लिख लीजिएगा, बिकॉज दीज अपॉइंटमेंट्स आर वेरी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, राइट. सो करंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन सा है? करंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जनरल धीरज सेठ का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ही विल रिप्लेस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, who has provided his valuable services to the Indian Army for last 4 decades, right. So this is something which we should know. Now criminal justice system's digital push aims for a full rollout by next year. So there are 2 important things that we should know, that in 2024 3 new criminal laws were enforced, and these 3 new criminal laws were Bharatiya Nyaya Sanhita replaced Indian Penal Code, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita replaced Criminal Procedure Code, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam replaced Indian Evidence Act. Now, when these 3 new criminal laws came into existence, one of the most important aspect of these 3 new criminal laws were कि चीज़ों को थोड़ा सा हम डिजिटलाइज करेंगे, राइट. डिजिटल फॉर्म में हम एविडेंसेस को मैक्स टू मैक्स रिस्टोर करेंगे. जो भी आइडेंटिटीज होंगी, जो भी जितना भी रिकॉर्ड डेटा होगा, उसको हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टोरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय information when it is in digital form, and also when the information is in digital form, interconnectivity becomes very easy, right. You just have to connect different portal to that particular source of information. So now from January 1 2027, and these 3 new criminal laws which were enforced on 1st of July 2024, presidential assent December 2023 में मिला था, but notify किया गया था 1st July 2024 से. Now students, let's talk about the important aspect why we are discussing about these 3 new criminal laws on 1st of July 2026. So basically today we are celebrating the 2nd anniversary of the enforcement of the 3 new criminal laws, right. So let's start with our discussion.
So from January 1, 2027, procedures related to all investigations and trial under the new criminal laws will be recorded digitally, a senior Home Ministry official said on Tuesday. So basically, all the aspects of investigation, whether it's recording the statements of the witnesses or collecting evidences, filing of the FIR, every aspect of investigation would be recorded digitally. Now, moving on to this particular point, and the cutoff date for this particular initiative is January 1, 2027। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, अभिज्ञान पोर्टल, जिसके बारे में वी हैड अ वेरी थॉरो डिस्कशन। एंड व्हाट वाज अभिज्ञान पोर्टल कि जितने भी इंडिया में अक्यूज या जिनका क्रिमिनल डेटाबेस में रिकॉर्ड है, उसको हम अभिज्ञान पोर्टल से लिंक करेंगे, और जब कोई चेकिंग या जो पुलिस चेकिंग वगैरह रोड पे करती रहती है, तो वहां पर फिर आपके फिंगर या थंब स्कैन लेकर के ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा वेदर योर रिकॉर्ड इज इन क्रिमिनल डेटाबेस और नॉट। इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स आपकी चेकिंग कर रहे होंगे, जो वहां पर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनकी सेफ्टी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, राइट। सो नाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ओन्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म नेम्ड मेघराज। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज मेघराज। अब नाउ आइडिया इज वेरी क्लियर, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो क्लाउड को क्या बोलते हैं? मेघ, राइट। बादलों को मेघ भी बोला जाता है। सो मेघराज इज द नेम ऑफ दिस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जहां पर जितना भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल से रिलेटेड जो डेटा डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड एट मेघराज पोर्टल और द मेघराज प्लेटफॉर्म विच इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, जिसमें सारा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। अब दीज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस, के वाज इन्फोर्स्ड ऑन July 1, 2024। तब से लेकर के अब तक 74,66,000 FIRs have been registered, and also almost 63,572 zero FIRs have been registered। Zero FIR क्या होता है? Anyone? What is a zero FIR? Anyone who would like to answer the question, what is a zero FIR? What is a zero FIR? What is a zero FIR? Anyone who would like to answer the question, what is a zero? So zero FIR is, students, is not related to the jurisdiction of the पुलिस स्टेशन। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं मान लेता हूं कि मैं कर्नाटका या बैंगलोर घूमने गया, या मैं तमिलनाडु में कहीं पे घूमने गया, मैं घूम रहा था, मेरे साथ में कोई क्राइम कमिट किया गया, मेरे अगेंस्ट कुछ क्राइम कमिट हुआ। नाउ आई डोंट नो कि मेरे अगेंस्ट जिस पर्टिकुलर प्लेस पे क्राइम हुआ है वो कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल कर रहा है। आई डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस। मेरा मोबाइल, मेरी सारी बिलोंगिंग्स छीन ली गई है। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ जीरो FIR? सो द आइडिया ऑफ जीरो FIR इज टू फैसिलिटेट द विक्टिम। अब विक्टिम आसपास जाकर के ये नहीं पूछेगा कि भाई मेरे साथ यहाँ पर कुछ क्राइम हुआ है, तो ये पर्टिकुलर एरिया कौन से थाने के पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। मैं मेरा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर जाकर के एक FIR लॉन्च कर दूंगा, फिर जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर मेरा FIR ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दिस इज नोन एट जीरो FIR। जीरो FIR हैज नो रेलेवेंस टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, इट एक्नॉलेजेस द कमीशन ऑफ द क्राइम, राइट। सो 63,000 के आसपास जीरो FIR भी फाइल हुए जब से नए 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए, राइट। सो अब गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंडर ज्यादा से ज्यादा फॉरेंसिक लैब्स और एविडेंस के प्रोटेक्शन पर गवर्नमेंट का एक्सट्रीम फोकस है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें भी डिस्कस करना है, इट इज FATF। सो व्हाट इज FATF? Anyone would like to answer the question, what is FATF? So FATF is basically Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. So let's discuss about Financial Action Task Force as well, क्योंकि अभी रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुआ है FATF में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑल्सो नोन एज FATF।
Right. Now, what is Financial Action Task Force? So it's a dedicated organization. It's a dedicated organization to control, to, act as a watchdog when it comes to money laundering and global terror financing. Right. Right. Now, Financial Action Task Force was established in, it was established in 1989 on the sidelines of the G7 summit, and FATF has FATF has 39 members. Currently, FATF has 39 members, and it was created to control cases of money laundering and terror financing. Now, India is also a member of this particular group. Please remember this. India is also a member of this particular group. India became, or India was given, the observer status in 2006, and it became a full-time member in 2010. So within 4 years, we became a full-time member of FATF. Now moving on to the next point. So currently, I guess Indonesia is the only observer state of FATF, and its secretariat is located in Paris, France. Right. Now, the next important point related to Financial Action Task Force is, students, that it prepares two lists. Grey list and blacklist. Now, these two lists are prepared on the basis of the involvement of a country in the terror financing. Right. Now, so these are grey list and blacklist. So blacklist is basically that particular group. It's a high risk group. इट्स अ हाई रिस्क ग्रुप कि ये कंट्रीज जो ब्लैक लिस्टेड होती हैं ये बहुत ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, और ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज रहती हैं जिनको बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक सेफ हार्बर कंसीडर किया जाता है. राइट नाउ, which are the three countries which are the part of blacklist as of now? Which are the three countries which are the part of blacklist as of now? So these three countries are Iran, Myanmar, and North Korea. Right. Earlier, Pakistan was categorized under grey list, but it was removed from the grey list. और जब आप grey list या black list का part होते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा international scrutiny होती है. How you are utilizing your funds, whether you are providing any sort of support to terrorist organization or not, ये सारी चीज़ें FATF monitor करता है. Right. अब ब्लैक लिस्ट में अभी 3 कंट्रीज हैं, ईरान, म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया. अब इन तीनों कंट्रीज का एक स्पेशल फीचर क्या है? एनीवन? राइट. तीनों स्टेट्स ही या तीनों कंट्रीज ही अब डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है. राइट. ईरान में वी हैव अ सुप्रीम लीडर, म्यांमार में देयर इज अ मिलिट्री coup, एंड नॉर्थ कोरिया में वी हैव अ डिक्टेटर. So when a country is kept under the blacklist, you have a lot of economic sanctions as well. आप बहुत freely trade नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा international funding नहीं मिलेगी, क्योंकि there are certain apprehensions कि अगर हम आपको funding provide करेंगे, you will utilize that particular funding to finance terror activities, right? और last year जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब इंडिया पे अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने अपने डेलीगेशंस भेजे थे मल्टीपल कंट्रीज को, और उन कंट्रीज का में डेलीगेशन भेजने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंश्योर दैट पाकिस्तान must be brought back again into the grey list. But again, Pakistan at this point of time, Pakistan is a good friend of
अमेरिका, तो उसको अभी इतनी सारी चीजें फेस करनी नहीं पड़ रही हैं. बट अगेन, so questions on FATF credibility reflect fears of scrutiny set by India. So basically India have made it absolutely clear कि जो लोग FATF की credibility पर question कर रहे हैं, those institutions are questioning the credibility of FATF because they are quite skeptical कि उनका भी नाम आ सकता है. मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का 20 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है. दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, नथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इवन द विकेट हैव द राइट टू अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट had said in a judgment. So we know this, that currently there are, you know, one important issue related to the embezzlement of assets at Ram Temple. Embezzlement of assets at Ram Temple. Now what's relevant when we talk about embezzlement of assets at Ram Temple? So there are 8 individuals who has been against whom the FIR have been filed, and it has been there are substantial evidence to prove the fact कि वो लोग assets embezzlement में involved थे, theft में involved थे. Now the entire Faizabad Bar Association has decided that not a single advocate will represent these 8 individuals who are involved in the embezzlement of assets at Ram Temple. I mean, रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, रिलीजियस साइड है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए लोगों को. बट एट द सेम टाइम देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरीवन शुड हैव अ राइट to get a legal representation, right? So even the wicked have the right to a lawyer. So it doesn't matter what kind of a criminal you are, you always have a right to have an advocate, right? अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि जो वेस्ट बंगाल में एंटी सोशल बिल आया है, उसमें यही एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज है कि a person who was said to be involved or who was allegedly involved in the commission of some sort of anti-social activity, he can be kept or he can be detained for a period of 1 year without providing him a lawyer or without providing him an advocate, right? So this is something which we have to understand, right? So the Supreme Court judgment will come into picture. An advocate would be appointed to represent all these 8 accused. ऐसा बिल्कुल होने वाला है, ऐसा इसमें कुछ भी substantial change नहीं होगा, right? So now moving on to the next point. Killing of Palestinian children, part of larger plan of genocide. So it is about this statement is given by Justice S. Muralidhar, and a lot of things have been said about the killings of innocent in Gaza. अभी हम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बाद में कि कितने सिविलियंस की जान वहां पर गई है सिंस 7th of October 2023 व्हेन इजराइल स्टार्टेड इट्स काउंटर ऑफेंसिव इन गाजा स्ट्रिप, और कितने चिल्ड्रन है, कितने बिलो 5 एज के चिल्ड्रन है जिन लोगों की जान गई है वहां पर. एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ जेनोसाइड बाय सो मेनी legal luminaries and experts, right? Now we have 2 articles. So editorial again, India's Israel habits means to West Asian realities, right? So again, the first point that we should discuss is going to be the second column. यहाँ पे second column में हमें क्या याद रखना है? So we know this, that Israel and United States of America started bombing Iran on 28th of February 2026, and Indian Prime Minister was visiting Israel from 25th to 26th of February 2026. Just after his visit, within 48 hours, Israel and United States of America launched a full-fledged strike against Iran. Now, during this particular visit, Mr. Modi was also conferred with the highest civilian honor of Israel. Now, at the same time, when this particular conflict started on 28th of Feb, 2 दिन पहले हम भी तो वहीं पे थे ना, इजराइल में. तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशनिंग था उस पर थोड़ा सा एक नेगेटिव इमेज मेकिंग हुआ. एंड व्हाई? बिकॉज इंडिया वाज एट दैट टाइम in Israel, and also though the fact is no third party could control anything, but ऐसा भी तो है ना कि मतलब अब ओवरनाइट तो डिसाइड कर नहीं लिया होगा ना कि हम लोग अटैक करने वाले हैं ईरान को, राइट? इट हैज बीन डन आफ्टर अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग,
राइट. सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हिंट फॉर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने किस तरीके से काम किया. राइट, बट अगेन that's irrelevant at this point of time. When leaders make foreign policy decisions, each may appear reasonable in isolation. However, their cumulative impact can be strikingly different from what was originally intended. As Iranian President Masoud Pezeshkian invited Prime Minister Narendra Modi to the funeral of former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, India's deepening engagement with Israel perhaps fall into that category. What was once a mutually beneficial partnership between New Delhi and Tel Aviv seems to have become more of a habit than the product of a serious strategic deliberation. Yet, sound policy cannot be guided by the momentum of habit, for habit and strategy often pull into opposite direction, right? So the author of this article is trying to, assert a very important point, that India and Israel are a very long standing partners. Israel has helped a lot India, but earlier these relations were based on something, right? These relations were mutually beneficial for each other. But recently, Iran has invited Indian Prime Minister to participate in the funeral procession of the second supreme leader of Iran, Mr. Ayatollah Ali Khamenei. Now, the question is grave, the question is serious, and the question is important. Whether India will participate, or whether Indian Prime Minister will participate in the funeral procession of Ayatollah Ali Khamenei or not. Because we share very good bond with Iran. ईरान पे जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगे थे, हमारे ईरान के साथ में बायलैटरल रिलेशंस आर वेरी गुड. एंड रिसेंटली जब से प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लिफ्ट किए गए, वी आर नेगोशिएटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद ईरान. नाउ द क्वेश्चन बिफोर इंडिया इज, कैन इंडिया ट्रस्ट इट्स रिलेशंस विद इजराइल, और क्या वो ईरान में फ्यूनरल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, और इंडिया विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द bilateral relations that we have with Israel. Now these relations have become more of a habit. Earlier these relations were mutually benefit for both the countries, but now it is a kind of habit कि हम भाई इतने टाइम से हम अच्छा रिलेशन शेयर कर रहे थे, तो अब हमारा कोई बेनिफिट भी नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट भी नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशंस में. बट वेदर इंडियाज अप्रोच of keeping itself involved keeping itself involved or keeping itself engaged with Israel will impact its long-term relations with West Asian countries. That is one important aspect that India should look after at this point of time, right? So India's Israel habit meet West Asian realities is the title, which actually justifies a lot of things, that why the title of this particular article is like this. अब दूसरा important point है जो 3 language policy which was introduced by the Central Board of Secondary Education. Now this Central Board of Secondary Education introduced the 3 language policy, pushing the National Education Policy 2020. Right, the controversy over introducing a third language from class 6 stems from an unresolved contradiction in the NEP 2020. At several places, NEP rightly extols the special importance of English, especially in mathematics, science, and even legal education, and does not curb it with foreign languages such as French or Spanish. At the same time, it advocates the 3 language formula with 2 languages required to be native to India, one of them ideally the mother tongue, in effect relegating English to the status of foreign language. So there are 2 important aspects. The first one is जो क्लास 6 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है सीबीएसई क्लास 6 से. अब इसमें क्या है कि इसमें इंग्लिश हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज पॉलिसी सेज कि जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें इंग्लिश में वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिलेगा, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी उन सब्जेक्ट्स में लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, लीगल एजुकेशन एंड अदर थिंग्स. सो इट वाज नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश एंड फ्रेंच वर गिवन द स्टेटस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. बट जब हम क्लास 9th ऑनवर्ड्स बात करें, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है कि 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, और 2 नेटिव लैंग्वेज के साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज होना चाहिए. अब ये जो 2 नेटिव लैंग्वेज हैं, इसमें एक आपकी मदर टंग
और इसके अलावा कोई एक और इंडियन लैंग्वेज जो किसी पार्ट में इंडिया के बोली जाती है, राइट। और यहाँ पर जो तीसरी लैंग्वेज है वो फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए, और यहाँ पर इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कंसीडर किया गया. Now the same policy is giving two different kind of status to a common language. When we talk about students who are studying English since from class 6 onwards, उनके लिए English is not a foreign language because it is essential to understand science, mathematics and legal education. But when we talk about students who are studying English फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स, उनके लिए इंग्लिश इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि वहां पर जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वहां पर आपको 2 नेटिव लैंग्वेज ऑप्ट आउट करनी है और एक फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट आउट करनी है. और इनमें से भी जो 2 नेटिव लैंग्वेज है इसमें से एक आपका मदर टंग होना चाहिए और एक कोई और इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप सीखनी चाहते हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग विच मस्ट बी रिजॉल्व under the national education policy of 2020. Reimagining sovereign AI for India's strategic future. So why we are discussing this particular article? So this article is covering aspects, certain aspects of artificial intelligence which we have already discussed. So recently we got to know that United States of America restricted the use of Mythos and Fable 5. Mythos 5 and Fable 5, these are the two important प्रोडक्ट्स ऑफ एंथ्रोपिक. और इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो यूसेज था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन यूजर्स के लिए लिमिटेड कर दिया. प्रोडक्ट्स वर लॉन्च्ड ग्लोबली बाय एंथ्रोपिक बट दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी पावरफुल, सो द यूसेज ऑफ दीज टू पावरफुल प्रोडक्ट्स वाज लिमिटेड टू ओनली यूएस यूजर्स, राइट. नाउ the Trump administration is simultaneously considering equity stakes in leading AI companies, ostensibly to redistribute the supernormal profits expected from technological advances. But at the same time, a lot of experts are suggesting कि जो ये AI boom है, ये burst होने वाला है. Right, look at these companies, look at the staggering valuation that these companies have. $1 trillion company was constituted or like established like 3-4 years back, and they have a staggering valuation of $1 trillion, right? So AI boom is many people are saying that this AI boom will burst soon, or will go back to the the era before 2023, जो हमारा प्री कोविड प्री AI वाला एरा था. कुछ चीज़ों में AI आएगा, बट जितना ड्रास्टिकली लोग सोच रहे हैं AI को चेंज, AI चीज़ों को चेंज करेगा, उतना नहीं होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि whether India have that kind of investment जहां पर हम इंश्योर कर सकें कि we can have a very strong AI infrastructure. The answer is absolute no. We only invest 0.65% of our GDP on the research and development aspect. United States of America invests 3.5%. China invests 2.78% in the research and development aspect. So if India wants to take a leap forward, then they have to increase the allocation of resources for the research and development in the AI infrastructure, right? So this is something which is important. Industry must set up. So the government should also prioritize AI investment and AI establishment. Now, there has been a report by the United Nations, and this report is suggesting that 73,000 civilians have been killed in Gaza, or and Gaza Strip. 73,000 civilians were killed. These were the individuals who were not involved with Israel, who were not in conflict with Israel, but despite the fact they were killed. And out of these 73,000 individual civilians, there were 21,289 children. 21,289 children. The number is huge. This is a huge number. Approximately 30% of civilians who were killed in Gaza were children. Under 5 कितने थे? 5,031. Under 5, under the age of 1,029, and newly borns were 420. Total 21,000 children disabled हुए since the beginning of this conflict on 7th of October 2023. And these numbers tells you the situation in Gaza Strip, that how sensitive the situation is. And and 21,000 children who were killed in the Gaza Strip, they represent approximately 2% of the child population in the entire region. So आप सोच सकते हैं कि 2% population इजराइल ने eliminate कर दिया है.
एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर क्लेमिंग कि अभी जो गाजा में हो रहा है दैट इज अ जेनोसाइड, इट इज अ जेनोसाइड, right? So this is something that we have to understand, that how and I hope something will change after this particular report of United Nations, but Israel seems to be least bothered by all these reports. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको जो करना है वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं, कौन उनको रोक पाए. टेक्स एंड कॉन्टेक्स्ट में वी हैव द fiscal tightrope for state government. Right. So we know this recently the 16th Finance Commission's recommendations were implemented from 1st of April 2026. And now we know this that the devolution of taxes is at 41%. सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 41% होगा. Now when we talk about state government, students, state governments have not multiple sources of revenue. They have very limited sources of revenue, whereas union government has a lot of sources of revenue. They have also very strong borrowing power when we talk about the union government, but the state government does not have that kind of strong borrowing power. So state governments, most of the time these state governments suffers a lot of problem in securing funds. अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु ने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया था, एंड इन दैट वाइट पेपर दे क्लेम्ड दैट हाउ द सिचुएशन ऑफ तमिलनाडु इज नॉट गुड. Tamil Nadu is under a lot of financial stress, though their objective is to make Tamil Nadu a $3 trillion economy by 2047, but the financial stress is huge, right? Kerala and Tamil Nadu are among the most socially and economically advanced states in India, yet the finances of both the governments, like those of most other states, are under stress. The white papers recently released by two governments describe their outstanding debt as alarming. State government debt is often vilified as the result of fiscal mismanagement, but it may in fact reflect a mismatch between the development aspirations and the limited fiscal capacity of the state government. So, I mean, अब मुझ पे अगर लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टेट, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ या मैं आपका एग्जांपल देता हूँ. लेट्स टेक देयर इज अ पर्सन एक्स, उस पर बहुत ज्यादा डेट है. तो दो रीजंस हो सकते हैं उस डेट के होने के. पहला कि उसका जो फिस्कल मैनेजमेंट है दैट इज नॉट गुड, दैट माइट बी द फर्स्ट रीजन. एंड व्हाट कुड बी द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जो उसके एस्पिरेशंस हैं कि मैं ऐसा डेवलप करना चाहता हूँ, उस एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए उसके पास में रिक्वायर्ड सोर्सेस या रिसोर्सेस नहीं है. तो उन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की एब्सेंस में आप क्या कर रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो पब्लिक डेट हो रहा है दैट इज माउंटिंग, राइट? सो दीज आर द टू रीजंस हाउ द फिस्कल डेट कैन और द पब्लिक डेट कैन इंक्रीज. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, debt build over the years with deficits which arise when the government's expenditure overshoots its tax and other receipts. So we know this कि when the situation of public debt arises, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा होता है, then a majority of the state government expenditure is on social sectors such as health and education and economic sector. इसीलिए आप देखेंगे कि केरला जो मोस्ट ऑफ द सोशल एजुकेशन और हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं उनमें हमेशा टॉप पे ही रहता है. क्यों? क्योंकि उनका हमेशा से एक एस्पिरेशन है दैट विल प्रोवाइड utmost top notch facilities to the people of Kerala, और उनके पास में उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एब्सेंस में वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत ज्यादा पब्लिक बोरोइंग या बहुत ज्यादा वो बोरोइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो पब्लिक डेट है दैट इज कीप ऑन माउंटिंग, राइट? स्टेट मीट्स देयर एक्सपेंडिचर पार्टली थ्रू देयर ओन रेवेन्यूज. अब स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू मेंटेन कैसे करते हैं? उनके पास में पैसे आते कहां से? सो पहला तो वो जो स्टेट जीएसटी होता है, फिस्कल ट्रांसफर्स होते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटीज होती है, इसके थ्रू जो उनके पास में रेवेन्यू आता है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और इसके बाद में सेकंड मेन सोर्स क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू शेयर प्रोवाइड करती है, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. सो द फर्स्ट वन इज स्टेट का ओन शेयर कितना है केरला में? 53.3%. सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स कितने आते हैं? 18%. और ये बोरो कितना करते हैं? 28.8%, राइट? So borrowing is more than the contribution made by the central government. Right? This also highlights one important fact, that actually why the public debt is so huge, because their aspirations are high. There is nothing wrong about it, but these aspirations are not met because of lack of funds or from the central government, right? So this is something which we have to understand. Now और केरला बहुत बड़ा स्टेट नहीं, केरला के पास लेकिन फॉरेन रेमिटांसेस बहुत आते हैं, क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं और वहां से वो बहुत सारा पैसा केरला को भेजते हैं. तो केरला के पास में फॉरेन रेमिटांसेस बहुत आते हैं.
Trump's involved in Qatar, Iran says no plan for direct talks with the United States of America. So yesterday we discussed about this particular thing, that Donald Trump said on 29th of June that we will stop attacking each other. और दोहा कतर में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना था फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ talk, but Iran has refused that they will not participate in the next round of talk, which are scheduled to take place in Doha. Although the representatives of United States of America has reached Doha, but again, Iran will not participate. अब US Supreme Court ने with a ratio of 6:3. Now another blow for the for the Trump administration. अब अगर आप कोई चीज इलीगल करेंगे तो कोर्ट तो पिक्चर में आएगा ही, और कोर्ट पिक्चर में आ रहा है. अभी रिसेंट क्या, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बर्थ राइट सिटीजनशिप होता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. देयर इज अ कपल हु वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर अ ट्रिप, और वहां पर उनको एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा उसका बर्थ राइट होगा यूएस सिटीजनशिप का, राइट. अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो ये कॉन्सेप्ट था, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी. नाउ द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट attempt to restrict birthright citizenship in the United States is a right long woven into the fabric of American society, scuttling one of his top priorities in his crackdown on immigration. The judges upheld a lower court's decision that blocked Mr. Trump's executive order directing US agencies not to recognize the citizens of children born in the United States if neither parent is an American citizen or legal permanent resident, also called green card holder. So Trump का पॉलिसी क्या था कि अगर कोई US सिटीजन जिसका बर्थ अमेरिका में हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ नीदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वर अमेरिकन सिटीजन्स, तो ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट ही कंसीडर किया जाएगा. बट यूएस सुप्रीम कोर्ट हैड सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो 14th अमेंडमेंट है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप कन्फर करता है. एंड व्हाट इज बर्थ राइट सिटीजनशिप? इट डजंट मैटर वेदर योर पेरेंट्स आर अमेरिकन सिटीजन और नॉट, बट if the person is born in United States of America, then he or she has an ultimate right to get the citizenship of America. तो अब बहुत से लोग अब आप मतलब बहुत इनिशियली ना इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लोगों ने एक्सप्लॉइट भी बहुत किया. मतलब बहुत टाइम पहले क्या होता था कि लोग कंसीव करके प्रेगनेंसी, और जब चिल्ड्रन का बर्थ होने वाला होता है, चाइल्ड बर्थ होने वाला होता था, तो वो क्या करते थे, अमेरिका चले जाते थे. और फिर जब वहां पर बच्चे का जन्म हो जाता था तो बच्चा क्या होता था, अमेरिकन सिटीजन बन जाता था, राइट. तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे, बट ऐसे कुछ कुछ इंस्टेंसेस होते थे, बट ये सारे इंस्टेंसेस होते थे बिकॉज 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इस चीज की परमिशन देता है, राइट. अब ऐसा तो कोई है नहीं कि इसमें कोई लूप होल है जिस लूप होल को लोग मिसयूज कर रहे थे. दिस थिंग इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, तो लोग उसका यूज कर रहे थे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम आ जाते हैं टेस्ट पे. नॉर्वे बाहर हो गया, जर्मनी बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, राइट. सो अ लॉट ऑफ अनफोर्सीन थिंग्स आर हैपनिंग. So which specific now this is related to the removal of Lok Sabha speaker. We know this that in 2026 a removal motion was initiated against the speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, and Om Birla became the 4th speaker against whom this particular motion was initiated. And I have already told you that the next 3-4 quizzes that we'll be doing, all those quizzes will be related to the free trade agreements. India EU free trade agreement, termed as mother of all trade deals. India New Zealand free trade agreement, India EU free, India UK free trade agreement, India Oman free trade agreement. ये 3-4 free trade agreement है जिन पे हम एक detailed quiz करेंगे in the upcoming sessions of the Hindu analysis. Now moving on to the quiz of 1st of July. It is related to the removal of Lok Sabha speaker. Which specific constitutional provision lays down the explicit condition and procedures under which the speaker or deputy speaker of the Lok Sabha may be removed from office by a resolution of the House? Article 93, Article 94 clause B, Article 94 clause C, or Article 96. Which is the correct option for question number 1? Which is the correct option for question number 1? Which specific constitutional provision is related to the removal of the Lok Sabha speaker or deputy speaker? Anyone who would like to answer question number 1? What is the correct option for question number 1? So the correct option for question number 1 is Article 94 clause C is related to the removal of Lok Sabha speaker. So for question number 1, students, the correct option is option C. Now moving on to the next point. Once a written notice for the removal of the Lok Sabha speaker is submitted to the Secretary General
What is the mandatory minimum advance notice period required before the resolution can be formally moved in the House? So first you have to submit the motion or notice of first you have to submit a written notice for the removal with the secretary general, और उस सेक्रेटरी जनरल के पास जब आप अपना रिटर्न नोटिस सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको कितने टाइम का एक एडवांस नोटिस देना रहता है हाउस को बिफोर फॉर्मली ब्रिंगिंग द रिमूवल मोशन अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर. You have four options for this particular question. Option A 7 days, option B 10 days, option C 14 days और option D 30 days. Which is the correct option for question number 2? 7, 10, 14 और 30. कितने टाइम का आपको मिनिमम नोटिस देना रहता है हाउस को बिफोर यू ब्रिंग अ फॉर्मल मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर? 7 days, 10 days, 14 days और 30 days. So for question number 2, students, the correct option is option C. You need to give a prior notice of 14 days before bringing the formal notice against the Speaker of the Lok Sabha. Now, for a moved resolution seeking the removal of the presiding officer to be successfully admitted for full discussion in the Lok Sabha, how many members of the parliament must physically rise in their places to signal support? Right now, once the motion is submitted in the House, right? Once the motion is submitted in the House, how many MPs must rise in their place to signal their support? और जब वो MPs rise कर जाते हैं उसके बाद ही क्या होता है, उस रिमूवल मोशन पर डिस्कशन स्टार्ट होता है. We have four options: 20 members, 50 members, 100 members और 1/10 of the total membership. So how many members of the parliament must rise at their place to support this particular motion? So for question number 3, students, the correct option is B. 50 members must rise at their places. Under Rule 200A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which of the following is a strict statutory restrictions placed on the member who originally submitted the no confidence motion once it is formally admitted for discussion? So what is there in Rule 200A? The member must act as a temporary presiding officer. The member is barred from casting a vote in the first instance. The member is not permitted to make any introductory speech. The member must secure a written consent from the leader of the opposition. So for question number 4, students, please remember this. The member of parliament who has submitted the motion for the removal of the presiding officer of the House, that particular member is not permitted to make an introductory speech. So for question number 4, the correct option is option C. The member who has submitted the removal motion is not allowed to make the introductory speech when the discussion is about to start regarding the removal of the Lok Sabha Speaker. To successfully pass a resolution for the removal of the Speaker under Article 94, the Constitution mandates an effective majority. How is an effective majority technically defined within the operation rules of the Lok Sabha? So to remove the Lok Sabha Speaker from his seat or from his office, you need an effective majority. What is effective majority? A majority of 2/3 of the members present and voting, a majority of the total strength of the House including vacant seats, a majority of the total strength of the House minus vacant seats, a simple majority of the members present and voting on that day. So what do we mean by effective majority? It's a very commonsensical question. Question number 5. Question number 5. Effective majority means majority of the total strength of the House. अब अगर लोकसभा की बात करें हम, तो जिस टाइम पर वोटिंग होने वाला है उस टाइम पर टोटल सीट्स हैं लोकसभा में 543 और उस समय पे 5 सीट्स वेकेंट हैं. तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? 543 माइनस 5, दैट इज 538. और 538 के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ वोट चाहिए होंगे वो कितने होंगे? 270. Right. So effective majority means majority of the total strength of the House minus vacant seats. Now question number 6.
While a resolution for their own removal is under active consideration by the House, what is the restricted status of the Speaker's voting right under Article 96? They cannot vote under any circumstances. They can vote only in the first instance but lose their casting vote in the case of a tie. They cannot vote in the first instance but retain a casting vote to break a tie. They retain both a regular first instance voting and a secondary casting voting. So while the removal motion is initiated, स्पीकर के जो वोटिंग राइट होते हैं वो क्या होते हैं? So for question number 6, students, please remember this. This is extremely relevant. When a removal motion is initiated against the Lok Sabha speaker, they cannot vote in the first instance, but if there is a tie, they can right. So for question number 6, students, I'm sorry, for question number 6, the correct option for question number 6 is option B. So they can vote only in the first instance but lose their casting vote in case of a tie. So there are two important things when a removal motion is initiated. The Speaker of the Lok Sabha cannot preside the proceedings of the House, and the second one is they can only vote in the first instance, but वो जब अगर टाई हो जाएगा तो उस इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर पाएंगे. Now question number 7. The recent no confidence motion against Speaker Om Birla was ultimately defeated in the House. Through which specific voting method was this resolution officially voted down and disposed of? Division vote, secret vote, voice vote, or electronic slip count? Question number 7. किस तरीके की वोटिंग के बाद जो ओम बिरला के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया गया था वो बेसिकली डिस्पोज ऑफ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7. तो बेसिकली वॉइस वोट हुआ था. जब वोटिंग स्टार्ट होना शुरू हुई थी तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने इतनी तेजी से नाय बोला कि जो रिमूवल मोशन था वो नाय और आय बोलना होता है, राइट? सो ने मीन्स नो, आय मीन्स यस. सो थ्रू वॉइस वोट द रिमूवल मोशन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ. Current political developments highlight the rarity of this procedure. In the history of independent India's parliamentary democracy, how many Lok Sabha speakers have been successfully removed from the office through a formal resolution? 0, 1, 2, 3. So till this date, 0 speakers have been removed from their office. 4 speakers हैं ऐसे जिनके अगेंस्ट रिमूवल मोशन इनिशिएट हुआ है, बट किसी भी स्पीकर के अगेंस्ट ये रिमूवल मोशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है. प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Prior to the resolution initiated against Speaker Om Birla, formal removal motions were brought against only 3 speakers in India's history. Who among the following was the first Lok Sabha speaker to face such a motion in 1954? Hukam Singh, Balram Jhakhar, J.V. Malvalankar, or M.A. Ayanagar? Who was the first speaker against whom the removal motion was initiated? Hukum Singh, Balram Jhakhar, J.V. Malvalankar, or M.A. Ayanagar? So for question number 9, students, the correct option is option C. J.V. Malvalankar was the first speaker against whom the removal motion was initiated by the Lok Sabha, right? And he was also the first speaker of the Lok Sabha in totality. What specific procedural development during the budget session served as the primary trigger for the opposition to submit the joint removal notice against Speaker Om Birla? The unilateral certification of contentious financial text as a money bill, the denial of permission to the leader of opposition to discuss former army chief's unpublished memoir, the immediate suspension of 50 opposition MPs under the anti-defection law, the arbitrary allocation of dynamic voting time under the 10th schedule. So for question number 10, क्यों लेकर के गया था रिमूवल मोशन? बिकॉज द स्पीकर ऑफ लोक सभा डिनाइड परमिशन टू राहुल गांधी. उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ थे MM नरवणे, उनका जो मेमोयर था उसका डिस्कशन पर परमिशन नहीं दिया था, उसके डिस्कशन के लिए परमिशन नहीं दी थी लोकसभा स्पीकर ने. एंड द रीजन वाज बिकॉज द मेमोयर इज येट टू बी पब्लिश्ड. अभी ये मेमोयर उनका पब्लिश नहीं हुआ है
और इसी वजह से लोकसभा का ये रूल है कि अगर कोई भी टेक्स्ट पब्लिश नहीं हुआ है, यू कैन नॉट कोट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट विद इन द premises of the parliament. So because of that particular reason, the opposition was not happy with the fact and they brought the removal motion against the speaker of the Lok Sabha, right? So this is all about today's analysis. आप लोगों का नंबर पता नहीं क्यों कम हो जा रहा है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि आप एक चीज़ मान के चलिए, 1.5 घंटे न्यूज़पेपर एनालिसिस का कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम हमें 1 घंटे में कवर करना विद द क्वेश्चंस। और अगर आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, यू कैन इंश्योर योर सेल्फ कि आप 80% इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर आप कर पा रहे हैं। 20% आप मैगजीन क्लासेस, 30% मैगजीन और क्लासेस आप कवर कर सकते हैं, राइट? सो माई सजेशन टू यू वुड बी कि प्लीज़ जस्ट वॉच इट। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इफ यू हैव फीडबैक यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, बट अगेन you have to ensure that you watch it every day, right?